Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, I want to say welcome to all of you in the online system of KPS schools. We are going to learn about mathematics. Today we have to solve some questions from chapter number 4, which is named as algebraic expressions and algebraic formulas. First of all, you must know that what is algebraic expression. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस यूज़ किए जाएं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. वी हैव डिस्कस सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन ऑपरेशंस में से अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किसी भी अलजेब्रिक टर्म पे अप्लाई कर दें देन वी कैन ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वी कैन डिफाइन इट एज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल, ऑपरेशन एंड कांस्टेंट. Then it is called algebraic expression. For example, m plus 8. Here m is variable and 8 is constant, and the addition operation is used here. In the second example, r minus 3. r is variable and 3 is constant, and here subtraction operation is used. Here you can see an example of algebraic expression 3x plus 4y plus 8. In this example, two variables are used which are x and y. Dear students, you have to remember, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर यूज़ हो then this number is called the coefficient of that variable. Here 3 is the coefficient of x, 4 is the coefficient of y, and 8 is considered as constant here. One more thing you have to remember, no equal sign is used in an algebraic expression. If we use equal sign then it will become an algebraic equation. Here you can see how to solve an algebraic expression. Algebraic expression में same terms को पहले solve किया जाता है. Here 4x plus 8 plus 3x plus 7 is an algebraic expression. इस expression में सबसे पहले 4x में 3x को add किया जाएगा which will give us 7x. After this constants are added which are 8 plus 7 and it will give us 15. So we get 7x plus 15 as the answer of this algebraic expression. Now we have to solve some questions from exercise 4.4. In the first question we have to rationalize the denominator. To rationalize the denominator means to eliminate any radical expression in the denominator such as square roots and cube root. Denominator को rationalize करने का मतलब ये है कि हमने गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से रेडिकल एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना है, उसे ख़त्म करना है. द क्वेश्चन इज गिवन एज 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन. फॉर दिस वी विल राइट 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. हमने गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. नाउ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर. फॉर दिस वी राइट 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर. इन द नेक्स्ट टर्म वी विल राइट 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 square equal to 16. That's why we will write 16 in place of 4 square. And square root and square are cancelled with each other, so we are left with the number 3 here. Now 16 is multiplied with 3 which will give us 48 in the denominator. By solving this term we get square root of 3 over 4. Here you can see radical expressions are eliminated in the denominator. In this way we can rationalize the denominator of given fraction. Similarly, in the second question we have to rationalize the denominator. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमने गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1. तो हम गिवन फ्रैक्शन को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. फॉर दिस वी विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 इज मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1.
हमने गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी. नाउ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, which will give us square root of 3 minus 1 whole square, and in the denominator we use the formula a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square. By closing this formula in the denominator we can write square root of 3 whole square minus 1 square. Here the value of a is square root of 3 and the value of b is 1. By expanding the formula in the numerator, a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square, it will give us square root of 3 square minus 2 into square root of 3 into 1 plus 1 square. Here the value of a is square root of 3, value of b is 1. And in the denominator, square root and square are cancelled with each other, so we are left with the number 3 minus 1 square equal to 1, that's why we write here 1. By solving this term, we can write the next term as 3 minus 2 into square root of 3 into 1 plus 1 over 2. By solving the same terms, we get 4 minus 2 into square root of 3 over 2. Now we have to take 2 common from the numerator. For this we will write 2 into 2 minus square root of 3 over 2. Here 2 is cancelled with 2 and we are left with the term 2 minus square root of 3. In the next question, we have to find the conjugate of x plus square root of y. The first question is given as 3 plus square root of 7. Here the value of x is 3 and the value of y is 7. जब भी हम x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमने जस्ट इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना है. बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 वी गेट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7. सिमिलरली बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 वी गेट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. Next is question number 3. In this question the value of x is given. We have to find the value of x plus 1 over x. अगर हमें x की वैल्यू दी गई है तो हम 1 over x फाइंड कर सकते हैं. First of all we will write x equal to square root of 3 plus 2. Similarly we can write 1 over x equal to 1 over square root of 3 plus 2. Now we have to add both these terms. For this we will write x plus 1 over x equal to, by putting the values of x and 1 over x we get square root of 3 plus 2 plus 1 over square root of 3 plus 2. For adding both these terms, we have to take the LCM. The LCM is square root of 3 plus 2 and in the numerator we get square root of 3 plus 2 whole square plus 1. Now by expanding the formula in the numerator a plus b whole square, here the value of a is square root of 3 and the value of b is 2, which is equal to square root of 3 square plus 2 into square root of 3 into 2 plus 2 square, and in the last we will write plus 1, and in the denominator we write same term square root of 3 plus 2. Here square and square root are cancelled with each other, so we are left with the number 3. In the next term 2 is multiplied with 2. For this we write 4 into square root of 3. And in the next term we know that 2 square equal to 4, that's why we will write 4 in place of 2 square, and in the last we write plus 1 over square root of 3 plus 2. Now we have to add 4 and 1 in the numerator. In the next term we write 3 plus 4 into square root of 3 plus 5 over square root of 3 plus 2. And then 3 and 5 are added, which will give us 8. For this we will write 4 into square root of 3 plus 8 over square root of 3 plus 2. By taking 4 common in the numerator we get 4 into square root of 3 plus 2 over square root of 3 plus 2. Here same terms are cancelled with each other and we are left with the term 4, which is the required answer. Okay students, now you have to solve the remaining parts of question number 1, 2 and 3 from exercise 4.4, and you have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Wish you good luck. Allah Hafiz.